Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. I am Ashish Bhargav and welcome to another episode of Daily News Analysis. और कैसे हैं आप सब? I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. And as we know that newspaper is very essential as far your exam is concerned because आपके एग्ज़ाम में जो भी current affairs के questions होते हैं, the best source is that current affairs. Best source is newspaper. So in daily newspaper analysis we discuss about the important events like आपके national news हो गए, international news हो गए, economy based news हो गए, sports based news हो गए, science and tech, personal news, summits and conference, and as well as miscellaneous topic हम भी discuss करते हैं. Apart from that we also discuss about any Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is very important for especially for the law entrance exam is concerned. Now if we talk about the newspaper is a very great source for knowing what is happening around us. And दूसरी चीज़ कि जो newspaper में जो भी content होती है, not each and every topic is important as I told you each and every class. And this is our new initiative of weekly current affairs quiz. इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, इसमें हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो आपके मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उससे हम क्वेश्चंस को फिल्टर करते हैं सो दैट काइंड ऑफ एमसीक्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो जो आपके एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपको ये आइडिया देते हैं कि आपको एग्ज़ाम में व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन बी पॉसिबल टू आस्क, राइट. नाउ वन मोर थिंग दैट वी कैन से इज़ कि इसमें आपको एवरी फ्राइडे लाइव होती है 4 PM पे. यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल प्रथम टेस्ट प्रेप सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर प्रथम टेस्ट प्रेप मेंटर्स एंड यू विल सी द चेंजेस इन योर सेल्फ कि जब आपके यहाँ पे जो भी क्लासेस होती हैं आपको वो आपको एक इमेंस आइडिया देगी कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. जहाँ भी जितने भी हमारे मेंटर्स हैं वो आपको एक अच्छे वे में बताते हैं चीज़ों को, जैसे LR कैसे करें, VA एंड करंट अफेयर्स एज वेल. Now here is the quote: nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. And as I told you in each and every class that the Hindu जो है आपका वो important है, Indian Express भी important, but not important of each and everything which is mentioned in the newspaper. ठीक है, स्पून फीडिंग टाइप से आपको बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, ठीक है, तो उसे आपको नहीं देखनी चाहिए बिकॉज इस एज पर माई सजेशन. बट इफ़ यू थिंक दैट कि उससे आपको बहुत सीख रहे हो एंड इट विल बी हेल्पिंग आउट इन योर टू सॉल्विंग द मॉक टेस्ट, कर सकते हो भाई, आप बिल्कुल कर सकते हो. मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि उसे मत देखो, ठीक है, बट इट शुड बी रेलिवेंट. इफ इट इज़ यूजफुल फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव देन यू कैन वॉच इट, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल. एंड व्हाट इज थिंग्स टू ब्राउज इन द न्यूज़ पेपर, एज आई टोल्ड यू फ्रंट पेज पे रीजनल न्यूज़ होती है, रीजन वाइज न्यूज़ होती है, नेशनल न्यूज़ होती है, एडिटोरियल होती है, ओपिनियन पेज होते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं एंड बिजनेस एंड इकोनॉमी एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं. सो दैट काइंड ऑफ न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And now we have taken initiative questions of the day, and that questions of the day is important because at the end of the session we discuss about the very few questions, 5 questions, and that 5 questions will give you an idea कि आपको एग्ज़ाम में कैसे कैसे questions को प्रिपेयर करनी चाहिए. Now before we start, we have to think about the headlines of the day as we do in the each and every newspaper analysis session. तो बच्चा आपका जो headlines of the day है इसमें आपको सबसे फर्स्ट है इसमें यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल इज ऑब्जर्व ऑन August 9th को. Each year to promote and protect the rights of world indigenous population, also known as World Tribal Day. ठीक है, सो August 9 को मनाते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे. और इंडिया में अगर बात करें तो 15th of नवंबर को जो है आपका वो होता है आपका दैट इज जनजातीय दिवस. एंड वाई 15th of November? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपको इस डेट को द वेरी फर्स्ट टाइम वी गॉट द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू. एंड उन्होंने गांव विजिट किया था बिरसा मुंडा का, विट इज़ बिकॉज वो बिलोंग करते हैं संथल रिबेलियन से, संथाल से. एंड संथल इज़ प्रिवेल्ड इन द वेस्ट बंगाल, सिंहभूम एरिया ऑफ झारखंड एंड सम पार्ट्स ऑफ बिहार एज वेल. सो संथल रिबेलियन के मेन हीरो थे आपके बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा वॉज बॉर्न ऑन
15th ऑफ नवंबर, इसलिए उस डेट को मनाते हैं जनजातीय दिवस इन द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन 15th ऑफ नवंबर. ठीक है. So this event also recognizes the achievements and contribution that indigenous people make to improve world issues such as environmental protection. And this year कभी भी आपको अगर डे एंड डेट्स होती हैं दी हुई डे एंड डेट्स, मेक श्योर दैट यू मस्ट अवेयर अबाउट कि लाइक उसका थीम क्या है. एंड दिस ईयर्स थीम इज इंडिजिनस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन. On December 1994, the United Nations General Assembly (UNGA) decided that the International Day of the World's Indigenous People should be observed on August 9th each year. So this was the United Nations General Assembly (UNGA) that decided that the International Day of the World's Indigenous People should be observed on August 9th each year. Now the next headlines is talking about Nagasaki Day. That observed annually on August 9th holds a somber significance in global history, and it marks the day when the Japanese city of Nagasaki was devastated by an atomic bomb during World War II. And this day serves as a reminder of the immense destructive power of nuclear weapons and the need for lasting peace. और August 9th को 1945 को क्या हुआ था, second atomic bomb contained Fat Man was dropped on Nagasaki, and the bomb detonated above the city, causing widespread devastation and loss of life. And next आपका आता है headlines of the day में the Quit India movement. Quit India movement was on August 8th, 1942. So Quit India movement was an historic event in India's struggle for independence from British colonial rule, and this year 2023 marks the 81st anniversary of the momentous movements that changed the course of India's history. As we commemorate this significant milestone, it is essential to reflect the ideals and sacrifices of the past, drawing inspiration for the present and the future. And the Quit India movement, also known as August movement, was initiated by Indian National Congress on 8th August 1942, and that led by Mahatma Gandhi, who called for the do or die, the famous slogan given by the Mahatma Gandhi. That is for the struggle for India's independence. This was the headlines of the day. चलो अब यहाँ बात करते हैं पहले और सबसे बेहतरीन आर्टिकल्स के बारे में. इंडिया शुगर सरप्लस लीडिंग टू अ क्राइसिस. So what kind of things we need to keep in mind to observe and to understand this article? So what are the nitty-gritty of the subject? First thing. Second, what are the important takeaways for the exam? That's why I just underlined and highlighted that portions. So this is very likely to ask in your exam, because as we know that India became the world's top sugar producer in the year 2021 and 2022. So what kind of questions we need to raise is how the sugarcane farmers impacted the excess sugar production, and what measures can be taken to prevent India's agricultural sector from collapsing due to the sugar surplus. And the third important question is that how have excessive sugarcane subsidies affected India's competitiveness in the global sugar market, and what are the implications of sugarcane over cultivation. सो देखते हैं क्या कहानी है. पहला है आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड टॉप शुगर प्रोड्यूसर. इंडिया इज़ अ वर्ल्ड्स टॉप शुगर प्रोड्यूसर. सो वी आर इन द रैंक 1, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इज कंसर्न. बट आपको ये पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा शुगर हम कंज्यूम भी हम खुद ही करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि जो टॉप प्रोड्यूसर है वो इंडिया है, राइट. दैट्स सरपासिंग ब्राज़ील एज द सेकेंड पोजीशन. सो ब्राज़ील जो है विद द रिकॉर्ड ऑफ 359 लाख टन्स जो है यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है, एंड गॉट द रैंक ऑफ सेकेंड. सो हाउएवर द एक्सटेंसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज इन शुगर प्रोडक्शन इज डिप्लीटिंग रैपिडली, leading to a potential crisis in future. So over cultivation of sugarcane has caused a sugar surplus and high exports, impacting groundwater negatively. And to prevent the risk of agriculture collapse, addressing groundwater overuse in the sugar industry is crucial. Recently अभी आपने देखा होगा जो शुगर को मैनेज करता है वो हमारा होता है FRP,
central government offers a fair and remunerative price, which is called FRP, fair and remunerative price, FRP schemes, which mandates a minimum price that sugar mills have to pay to sugarcane farmers, ensuring that farmers always get fair profits for their crops. Similar to the MSP, which is minimum support price. बिफोर सोइंग सीजन क्या होता है कि जितने भी फार्मर्स हमारे इंडिया में होते हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, आपको एक MSP देती है कि हम आपको हम इस रेट पे इसको प्रोक्योर करेंगे, राइट. सो शुगर कैन के लिए होता है आपका FRP, विच इज़ कॉल्ड फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस. So state government also offer heavy subsidies to incentive sugarcane cultivation, and some have argued that this is done to win farmers' votes in politically important rural areas. And the resulting sugar surplus has led to higher exports with a record of 110 lakhs ton export in 2021-2022. So in fact अगर बात करें तो like आपका Brazil, Australia and Guatemala file a complaint with the WTO, World Trade Organization को against India for violating international trade rules by offering excessive export subsidies and domestic support to farmers to outcompete other countries in the global sugar market. And what are the addresses to this issue? To deal with the sugar surplus, the Indian government considered diverting it to the production of ethanol, of organic compound made by fermenting sugarcane, molasses or sugar. So ethanol जो है, ethanol is an active ingredient in the alcoholic beverage and is also used in the chemical and cosmetic industry में भी इसका हम वाइड स्प्रेड यूज़ करते हैं, राइट. जो पेट्रोल बेस्ड व्हीकल है उस पर गवर्नमेंट चाह रही है कि आप इथेनॉल बेस्ड व्हीकल यूज़ करें, उसका ब्लेंड यूज़ करें, एंड इट हैज़ बीन फेयरली सक्सेसफुल. So it started with a modest goal of achieving a blending rate of 5%, but the target is set for 2025 is 20% आपको यूज़ करनी है इथेनॉल. So ethanol blended petrol, which is EBP, significantly reduces harmful emissions such as like आपको लगा लो carbon monoxide and from the vehicles. So government launched EBP program, right, in 2003 to reduce crude oil imports and curtail greenhouse gas emission from petrol waste. And so the government also reduced the goods and service tax on ethanol from 18% to 5% in 2021. The same year of the 394 lakh tons of total sugar produced, about 350 lakh tons were diverted to produce ethanol, while India achieved a blending rate of 10% months ahead of the target. So how does excessive sugarcane cultivation impact groundwater? India का जो EBP program है, which is called ethanol based ethanol blended petrol, and that reduced crude oil imports, sugar imports and greenhouse gas emission. Sugarcane requires 300 millimeter of rainfall, but top growing state, right, आपका हो गया जैसे for example उत्तर प्रदेश. So what are the solution for this problem इसका? So a better and more sustainable way should be would be to an access and then correct incentives that crops leading to a consistent surplus. Introducing fair and comprehensive subsidy schemes for a variety of crops that can help farmers diversify as well as distribute cultivation evenly, prevent monocultures and ensure equitable income. And India continues to become more of a global frontrunner in the agriculture sector, and it must be sustainably at the center. This is all about the crux of the article. Next is talking about full circle and farm reforms. अब इस आर्टिकल में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं? देखो, from the farm laws that has tried to free agricultural trade, the Modi government has reverted to control and curbs. This is pretty much on the lines of earlier short-lived experiment at decontrol back in 1947-48. So more than 3 years have passed since the Narendra Modi government enacted its the 3 farm laws, first through ordinance in June and then Parliament in September 2022, and it was built at the 1991 moment for the Indian agriculture. So the law was basically freed the trade in agriculture produce. Farmers had the choice to sell to anyone and anywhere in the country.
with the trade are no longer confined to a state government. Like क्या होता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है आपके पास, जिसको हम कहते हैं APMC. APMC क्या होता है बच्चे, आपका होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी. And in this spirit, May 2022 में the Modi government banned wheat export, and it has also moved export to sugar from the free from the restricted category, while capping the total quantity that could be shipped out in the year. In September 22 में broken rice export were prohibited and 20% duties थी वो impose की गई on shipment of other non paraboiled non basmati varieties. क्यों ऐसा? Because so that we need to promote the indigenous farmers. So the wheat export ban continues even though no sugar has been allowed to leave Indian shores after May this year. In July, it was decided to completely stop exports of all non-paraboiled non-basmati rice. अगर हिस्टोरिकल पैरेलल में से देखें तो अगस्त 1947 में के टाइम में इसमें कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स दिए हैं तो जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है. अगस्त 1947 में सम 60 मिलियन पीपल अ लिटिल अंडर 18% ऑफ द पॉपुलेशन. हमारी कंट्री की पॉपुलेशन उस टाइम में 60 मिलियन की थी, एंड वी विल सी अ लिटिल अंडर 18% ऑफ द पॉपुलेशन वो अंडर डायरेक्ट राशनिंग सिस्टम. राशन सिस्टम मतलब राशन कार्ड जो आपका बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन होती है, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन उनको हम कहते हैं, उनको राशन कार्ड दी जाती है. And getting 10 ounce, what it means 0.28 kg of cereals per capita per day on the average. So while below the originally envisaged on 1 pound, so ration required to deliver 1600 kilocalorie of energy, the system had become physically, financially and administratively difficult to maintain. So not for nothing, the finance minister R.K. Shantubam Shetty ने जो हमारे थे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, सो इन 1947-48 में यूनियन बजट में स्पीच में वार्न किया सीरियस थ्रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द राशनिंग सिस्टम. और अक्टूबर 1947 में आपको पता होनी चाहिए जो फूड ग्रेन पॉलिसी कमेटी थी, इट इज़ कॉल्ड फूड ग्रेन पॉलिसी कमेटी. फूड ग्रेन पॉलिसी कमेटी को इस्टेब्लिश किया हमने कब? अक्टूबर 1947 में. एंड अ फूड ग्रेन पॉलिसी कमेटी को हैविंग 3 लीडिंग इंडस्ट्रियल, लाइक आपको उसमें Poshtamaas, Thakur Das and Ghashtiyam Das Billa and Lal Shriram among its members be commended to reduction of India's dependence on the food imports as well as cutting down on rationing. And the proposal tha that was consistent with Gandhi's own philosophy of self-reliance. So with Gandhi leading his weight, Jawaharlal Nehru government on December 10, 1947 announced a program for planned, gradual and progressive control. और सितंबर 1948 में गवर्नमेंट हैज़ टू रोल बैक इंडियाज़ फर्स्ट एवर फूड ड्रग कंट्रोल एक्सपेरिमेंट विद लास्टेड ऑल ऑफ 9 months. 1948 में ड्रग कंट्रोल जो दैट वाज अटेम्प्ट एट अ टाइम व्हेन इंडिया कुड नॉट प्रोड्यूस इनफ फूड टू फीड एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन. इट वाज destined to fail, notwithstanding Mahatma Gandhi's to make our life natural, and the Nehru government tried again during 1954 to 54 May when food good crops embodied to relax movements control and cut a ration system. So this was all the entire crux that about this article. This talks about how the farm bill relate to the food grains and how the food grains lead to the our India and how we were facing in the food insecurity the time of Nehru era, and what was the main agenda for the rationing system and what was the role of FCI to procure all these things. So in these articles, this kind of articles is very important because आपको एक व्यू देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको एग्जाम में इससे पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखो जितने भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंटर्स हैं दैट आई हैव हाईलाइटेड इट ऑलरेडी. So no need to read each and every stranger, because as we know that not each and every stranger is important for your exam perspective. Now here is the bureaucracy as prosecutor and judge. इसमें controversial जो है हमारा that is called जन विश्वास एक्ट 2022. इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात हो रही है दैट द जन विश्वास एक्ट जो था वो अलाउ करता है ब्यूरोक्रेट्स को इन चार्ज ऑफ इन्फोर्सिंग द लॉ टू एक्ट कंडक्ट एन इंक्वायरी एंड impose the statutory penalty on finding wrongdoing is constitutionally suspect.
So in short, we can say that the controversial Jan Vishwas Act 2022, which was recently enacted into law by Parliament, has been touted by the government as a landmark piece of legislation aimed at improving ease of doing business in India by either decriminalizing or making compoundable offence across 42 legislations. So the fine print, which has received little media attention, is that while the legislation has mostly replaced criminal imprisonment with penalties, and it has transferred the power to impose these monetary penalties from judiciary to bureaucracy. For example, जन विश्वास एक्ट को अमेंड किया गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 से टू रिप्लेस इम्प्रिजमेंट एज अ पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस. बाद में आपने देखा फॉरेस्ट एक्ट जो था आपका 1927. फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैव द पावर टू नॉट जस्ट कंडक्ट एन इंक्वायरी टू डिटरमिन द डैमेज डन टू द फॉरेस्ट by anybody, but also order the offenders to pay an escape. So in the larger questions is that कि जो आपका whether giving the bureaucracy rather than the courts the power not to execute and factual disputes but also penalize to order compensation goes against the constitutional schemes of separation of powers. And as we know that we have independent judiciary system. So जो आपका first चीज़ इसमें क्या होनी चाहिए. So although the constitution है that does not mandate we can say separation of powers between the judiciary and the executive. So article 50 directs the state to achieve it is in due times. Second, the union governments begin creating a new class of statutory regulators such as the Securities and Exchange Board of India, which is called SEBI, and the Competition Commission of India CCI, which had powers to punish the private sectors with punishing fines. Virtually all these regulators ended up being headed by senior bureaucrats. So the Jan Vishwas Act जो है that carries forward this specific model of creating executive officers within the bureaucracy to impose penalties, and of these three categories discussed जो हमारा constitutionality of tribunals such as National Tax Tribunal है and the some regulators जैसे आप Competition Commission of India है that had challenged before the courts over concern the executive encroaching upon judicial powers. So larger picture में अगर आप इसे जानने की कोशिश करें, so the larger issue which we must worry about is that Republic of India that is backsliding on the separation of powers because the constant efforts by the bureaucracy of the Union executive to encroach upon judicial powers with the aid of elected ministers who are either indifferent or clueless. Now we talk about, like this article is talking about every act of silence amplifies the horror in Manipur. As we know that the Manipur issue. So the issues are initially it started with there were two dominant tribes in Manipur, that is Kuki and Meithei tribe. So the images and graphic accounts of Kukis, though women who were stripped, paraded and harmed by mobs and thugs, उसके बारे में ये articles है कि somehow it is tarnished the image of India as well. And what was the role of Act East policy in that? So these issues, if you talk about, that are connected to a state future, and there is virtually no talk about the efforts to meet Manipur aspiration through the Act East policy, which were connected the northeast to the Southeast Asia, right? So Manipur was to a big role to of, like in that case, if you talk about India's security and the connection with the north and connection with the, we can say, northeast to us, northeast to Southeast Asia. So initially that was a border issues as well. So this article basically talking about that FNR. So FNR is a forum for Naga reconciliation that brought together Meiteis and Kukis living in the state. So we need to find it out, like what is FNR is. It is called Forum for Naga Reconciliation, and the FNR has worked for the peace of reconciliation along the other Naga civil society leaders over 2 decades to bring peace and mutual respect among the bitterly divided factions.
So whether this will percolate across the border is not sure. What is clear is that Kukis and Meiteis in Nagaland have been assured of safety by the political leadership. So Mizoram says that over 12,000 persons from the Kuki and Zumi tribes, which have ethnic kinship with the Mizos, have taken shelter in the state. And this small state is struggling as it hosts another 40,000 plus Chin refugees from neighboring Myanmar who have fled a brutal military crackdown and fighting between insurgent groups and the Myanmar army. And second is that how and when did this information reach the heads of the police, the civil services and political leadership? What we do know is that a fire is an incident that was lodged on May 17th and the first arrest was announced at the Chief Minister press conference 2 months later. उसके बाद फिर रिसेंटली क्या हुआ, इशू हुआ, चेयरपर्सन जो थे हमारे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हु हैज़ कन्फ्रंटिंग रिसीविंग डिटेल कंप्लेंट्स ऑफ दीज अदर अटैक्स एज वेल. सो नाउ इट्स इंडिया टाइगर प्रोजेक्ट. इसमें आपको मेन रोल आपको जानना चाहिए NCTA के बारे में, विच इज़ कॉल्ड नेशनल So, NTC क्या National Tiger Conservation Authority. It's a National Tiger Conservation Authority. So, इंडिया के टाइगर काउंट की अगर बात करें तो इट वॉज रिवाइज टू 3,682. सो वी हैव वर्ल्ड मोस्ट टाइगर पॉपुलेशन. सेकेंड पोजीशन पे आपका है रशिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको टाइगर पॉपुलेशन मिलेगी. द फर्स्ट प्लेस इज आर ब्यूटीफुल कंट्री इज इंडिया. सो एज वी टॉक अबाउट कि यहाँ पे इंडिया के जो टाइगर रिजर्व्स हैं दैट हैव डन वेल, बट देयर रिमेन्स अ की क्वेश्चंस. हाउ मेनी वाइल्ड टाइगर्स कैन बी द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस nation sustain? So this is the 5th cycle of tiger estimation since the once in 4 years country-wide census was revamped with the scientific record in 2006 में. So for example 2006 में हमारे पास 28 टाइगर रिजर्व्स थे कंपेयर टू द 51 टाइगर रिजर्व्स अवेलेबल इन 2022. और ये कंडक्ट कौन करता है? वो आपको कंडक्ट करता है NTCA विच इज कॉल्ड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. सो इसमें आपको स्टेट के कुछ इश्यूज दी हुई हैं. लाइक गोवा डज नॉट सीम्स टू वांट एक्नॉलेज इट हैज़ एनी टाइगर थ्रू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. इट हैज़ 5 प्रपोजिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बी नोटिफाइड एज अ टाइगर रिजर्व. सो बात करें नेक्स्ट स्टेट ओडिशा की. सो ओडिशा टू इज़ नॉट हैप्पी विद NTCA रिपोर्ट एंड नाउ वांट्स टू कंडक्ट इट्स ओन सर्वे. सो यहाँ पे 1973 में अगर पास्ट की बात करें इसमें तो इट हैज़ बीन बेटर डेज विद इन द स्पैन ऑफ मंथ. और इसमें अगर आप बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न जो बॉर्डर स्टेट है विच फॉल विद इन द इंडो बर्मा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वन ऑफ द 25 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट. उसके बाद वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने इशूड किया रेड अलर्ट अराउंड वेरियस टाइगर रिजर्व दैट स्पेशली एरियाज इन अराउंड सतपुरा. Now, how NASA is trying to cut travel time to Mars by half. In less than 3 years, NASA could be testing a nuclear rocket in space. And the space agency, the Defense Advanced Research Project Agency, DARPA. So DARPA, which is recently in the news, आपको इसका full form पूछेंगे एग्जाम में, which is, if we can say that, Defense it's called Defense Advanced Research Project. Research Project Agency, that is called DARPA. And यहाँ पे $449 million program is named for the Draco, and Draco short for demonstration rocket for agile Kilchner operations. देखो इस टाइप के फुल फॉर्म्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो नासा की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. सो बात करें 4 months टू मार्स, यहाँ पे 26 months जो मार्स और आपके टाइम ट्रेवल थी उसको नासा ने कम किया है. सो बैक टू द फ्यूचर में बात करें, सो न्यूक्लियर प्रपोल्शन फॉर स्पेस इज़ नॉट अ न्यू इंडिया बिकॉज 1950 और 1960 में इसका प्रोजेक्ट ओरियन जो था वो लॉन्च किया था इसने नासा ने. प्रोजेक्ट ओरियन financed by NASA
एयर फोर्स एंड एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. सो एट द सेम टाइम में नासा और दूसरे एजेंसी ने दैट अंडरटुक प्रोजेक्ट रोवर, दैट वाज अ प्रोजेक्ट रोवर एंड प्रोजेक्ट नर्वा. दैट एफर्ट, उनका मेन एम क्या था, दैट एक्चुअली इट वाज एम टू develop nuclear thermal engines similar to context to those now being pursued by the Draco program. Now should the age of consent be revived in India? So आपको मैंने इसमें the court ने point out किया था इसके बारे में. अब ये आर्टिकल, सिमिलर आर्टिकल्स हमने since the beginning of the newspaper analysis we have discussed. इसमें मेनली आपको दिया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में, एंड उसमें क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चंस ऑफ द डे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये वेरी फास्ट क्वेश्चंस. ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय यूनिसेफ, UNDP, WEF एंड यूनेस्को. The right answer is option D1. UNESCO Global Education Monitoring Report 2023 warns against the uncritical adoption of digital technology in educational setting as there is little robust evidence of its added value in education. The Black Sea Green Initiative recently seen in news was backed by, obvious the right answer is which one? C option. और एंड द व्हाट इज सी ऑप्शन इज, आपको पता होगा सी ऑप्शन हमारा क्या है, यूनाइटेड नेशंस. विच अमंग द फॉलोइंग इज द नोडल प्रोक्योरमेंट एजेंसी फॉर पल्सेज इन इंडिया? इंडिया पल्सेज एंड ग्रेन एसोसिएशन, नेशनल पल्सेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI. It's got National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India. NAFED is the right answer. Food Corporation of India FCI is responsible for the procurement of rice and wheat. Consider the following statement of no confidence motion. Any Lok Sabha MP who can garner the support of minimum 100 MPs, not 50 MPs. And the first motion of no confidence was moved in the 5th Lok Sabha. No, that was in 1963. So the statement is correct. Only one is the correct one. And the last question. The State of World Forest Report is released by, that was FAO. D is the right answer. So 31% of the earth land surface, out which approximately 1/3 are primary forest. So this is all about the session, dear students, and I hope you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding this newspaper analysis, please let me know in the comment section. और आपको ये सेशन कैसी लगी उसे आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में शेयर करें. बिकॉज वाई आई एम टेलिंग यू द फैमिली ग्रुप, बिकॉज फैमिली ग्रुप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि दे मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, राइट. एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, सो प्लीज़ रेड वाले बटन को दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना, राइट. एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ all our Pratham Test Prep mentors. So stay tuned, we'll meet you tomorrow at the same time at 11:30. So till then, bye bye and take care.